So students, we have finished with the chapter number 9, that is days to celebrate. Now we will do the exercises which are related to this chapter. So first exercise, that is A, tick the correct options. So we have to tick on the correct options. In that, first question is, which festival is known as the festival of lights? Obviously Diwali is called as the festival of lights, so we have to tick in front of Diwali. Second question, in Holi we play with goats? No. Crackers? No. Colors? Yes. So colors is the correct option. Guns? Wrong. Third, Independence Day is celebrated on 25th December? No. 2nd October? No. 15th August? Yes, this is the correct option. So tick on the 15th August. 26th January is not the correct option. We celebrate Republic Day on 26th January. The next question is B, exercise B. Give one word answer. We have to write the answer in one word. First, one function you celebrate with your family is birthdays. The national festival celebrated on 2nd October. That festival is known as Gandhi Jayanti. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. Third, festival to worship goddess Durga. The name of that festival is Dasera. On Dasera we worship goddess Durga. Now the exercise C, match column A with B. We have to match A column with the column B. So in A column there are options like Holi, Eid ul Fitr, Christmas, Gandhi Jayanti, Janmashtami. And in B column there are options like Namaz and Sevaiya, Midnight Mass, Mahatma Gandhi, Lord Krishna, colors and balloons. So Holi. On Holi we play with the colors and water balloons. That's why Holi will be matched with the colors and balloons. Eid ul Fitr. In the festival of Eid ul Fitr, Muslims pray namaz and they make sevaiya as the sweet dish. That's why we have to match this with this. Christmas. On the Christmas day, Christians celebrate it in the midnight. And Christmas is celebrated in the midnight. That's why midnight mass. Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is the birth anniversary of Mahatma Gandhi ji. That's why we have to match with Mahatma Gandhi. Janmashtami. Janmashtami is the we celebrate Janmashtami to celebrate the birth of Lord Krishna. Lord Krishna was born on the day of Janmashtami. That's why we started celebrating the festival Janmashtami. So you have to match Janmashtami with the Lord Krishna. Okay. And then the last exercise from this chapter is D, answer the following. So you have to write these questions in your EVS notebooks. So from your chapter number 9, days we celebrate, we are on the exercise D, that is answer the following. So we have to answer the given questions in detail. In this exercise we have to answer the given questions in detail. So first question is, what is Diwali and who celebrates it? So they are asking कि what is this festival Diwali? Diwali क्या festival है और दिवाली कौन celebrate करता है? So the answer is, Diwali is a festival of lights. It marks the return of Lord Rama to Ayodhya after 14 years of exile. Hindus celebrate Diwali. So Diwali ये festival of light है. ये रोशनी का त्योहार है. और ये दिवाली फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? वी सेलिब्रेट दिवाली बिकॉज ऑन द डे ऑफ दिवाली लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर हिज 14 years ऑफ एग्जाइल. एग्जाइल मीन्स वनवास. उनको वनवास पे भेजा गया था. 14 साल के वनवास से वो वापस लौटे थे अयोध्या दिवाली के दिन. तभी हमने दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था. एंड हु सेलिब्रेट्स दिवाली? हिंदूज सेलिब्रेट दिवाली. नेक्स्ट, व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे? सो द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज, what is the reason behind to celebrate Independence Day and Republic Day? We have to mention the reason why we celebrate Independence Day and Republic Day. हम
इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिन और गणतंत्र दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है. आंसर इज वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बिकॉज ऑन 15th August 1947 our country got independence. So kids, on the 15th August 1947 our country got independence from the Britishers. Before that we were under the British government rule. हमारी कंट्री पर पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम ब्रिटिशर्स के गुलामी में थे. इसीलिए 15th August 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एंड देन वी बिकेम द फ्री कंट्री. दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट दिस डे एज द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिन. इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता. Next, and what is the reason to celebrate the Republic Day? We celebrate Republic Day because on 26th January 1950 India, sorry kids, I have not written A over here, India got a constitution. So on this day of 26th January in 1950, in the year 1950, our country India got the constitution. Constitution means it is the set of rules and laws which the citizens of country supposed to follow. हर एक कंट्री का अपना लॉ होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती है, ड्यूटीज़ फॉर द सिटीजन्स होती है, तो वो सब इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया होता है. एंड आवर कंट्री स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द डे 26 January 1950. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस डे एज द रिपब्लिक डे. ओके. The next question is question number 3. Which are our national festivals? So we have to name the national festivals in this question's answer. So answer is we celebrate following national festivals. Those are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. कौन से हैं national festivals? Independence Day मतलब स्वतंत्रता दिन, Republic Day मतलब गणतंत्र दिन, गांधी जयंती मतलब गांधी जी का जिस दिन बर्थडे आता है उस दिन को हम एज अ गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं. एंड द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इज ईद उल फितर सेलिब्रेटेड? दे आर आस्किंग व्हाट इज द रीज़न टू सेलिब्रेट ईद उल फितर. So answer is Eid al-Fitr is celebrated to mark the end of holy month Ramadan. Ramadan is a holy month of fasting. So Eid al-Fitr is celebrated to mark the end of Muslim holy month. The name of that Muslim holy month is Ramadan. जब ये रमादान का महीना ख़त्म होता है तो उस रमादान महीने के आखिरी दिन पे ईद उल फितर सेलिब्रेट करते हैं. और रमादान क्या है? एक होली मंथ है. ये मुस्लिम्स के लिए बहुत ही शुभ महीना माना जाता है जिसमें मुस्लिम्स सारे फास्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं. उनके फास्ट को क्या बोलते हैं? मुस्लिम्स जो फास्ट रखते हैं रमादान के महीने में उन फास्ट को बोलते हैं रोज़ा. वो रोज़ा रखते हैं, अपने नमाज़ पढ़ते हैं, अपने अल्लाह की पूजा करते हैं, है ना. और ये बहुत ही होली शुभ महीना माना जाता है और इस महीने के एंड पे वो ईद उल फितर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. ओके किड्स, आई होप you have understood all the answers. If you have any doubts you can ask me. Till then, thank you, have a good day.